नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की नज़रों के सामने से हाल ही में ये एक न्यूज़ आइटम गुजरी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें लिखा है संवेदनशील मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम फैसला, गर्भपात कराना या नहीं ये महिला का अधिकार है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू पे डिसीजन आया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का डिसीजन है। और जिस तरह से ये जजमेंट लिखी गई, जिस तरह से इसमें डिस्कस किया गया है हर एक एस्पेक्ट को, लीगल को, टेक्निकल को, मेडिकल एस्पेक्ट को, और जिस लॉयर ने इसमें रिप्रेजेंट किया है, जो अप्रिसिएशन मिली है, तो ये जजमेंट एक बहुत ही शानदार जजमेंट और पढ़ने के लायक है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल द लॉ स्टूडेंट्स एंड ऑल द न्यू लॉयर्स टू गो थ्रू इट। ये बहुत काम आने वाली जजमेंट है फ्यूचर में। काफ़ी सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को भी जो है एट लेंथ और एट डिटेल जो है इसमें डिस्कस किया गया है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा टू ऑल कि आप इस जजमेंट को जरूर पढ़ें। बहुत ही शानदार जजमेंट है। और इससे पहले कि मैं आपको ले चलूँ जजमेंट की तरफ, तो काइंडली आपसे वही रिक्वेस्ट, सेम सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा औरों से भी सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और अपने जो कमेंट्स दें, फीडबैक दें। और काइंडली अपने जो कमेंट्स और फीडबैक है व्हाट्सएप पे ना दे के इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और जो है आप इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो धन्यवाद। चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधा जजमेंट की तरफ। तो ये देखिए, ये जो है इस जजमेंट के जो फैक्ट्स है, बिगनिंग में ये लिख लिया गया था, नेम, एज एंड एड्रेस ऑफ द पिटिशनर आर विद हेल्ड टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, रूल रिटर्नेबल फॉरवर्ड। तो ये जो है बहुत ही एक सही तरीके से जजमेंट में ये लिखा गया है, क्योंकि नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि इसमें जो डिसीजन हुआ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फैक्ट्स है वो इस तरह से, द पिटिशनर फर्स्ट केम टू दिस कोर्ट इन मिड जनवरी 23, इसी साल की ये। बाय देन शी वॉज इन रफली हर 32nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। The petitioner said that a routine medical checkup showed serious fetal anomalies and abnormalities. फिर इसके ऊपर जो है मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी आई और वो मेडिकल रिपोर्ट भी डिस्कार्ड की ऑनरेबल कोर्ट ने। पूरा सारी चीज़ें जो डिस्कस की उसके बारे में। मेडिकल रिपोर्ट जो है पहला थी में, ऑन 16 जनवरी 23 we took on record the report of the Sassoon hospital that is marked X in our records. That report does not controvert the medical position or the result of the test. The condition of the fetus is undisputed, with the detection of microcephaly and lissencephaly. What are the report says is this। तो ये इसमें ही आगे पूरी रिपोर्ट जो है एट लेंथ डिस्कस की गई है। और इसमें जिस लॉ को, जो जिस एक्ट को जो इसमें डिस्कस किया गया एट लेंथ, वो है सेक्शन 3 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। जो सेक्शन 3 का जो हेडिंग है मेन वो है, व्हेन प्रेगनेंसीज मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। और ये उसके प्रोविजंस है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि इनकेस आप लोग इसके यहीं से देखना चाहे तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वीडियो को पॉज करके। फिर पैरा 6 में जो है जो मेन आर्ग्यूमेंट्स थे, वैसे तो इसमें काफ़ी डिटेल में और जगह पे भी इनका हवाला आया है, वो है ऑन any reading of the controlling sections, Miss Saxena points out the medical termination of a late pregnancy beyond 24 weeks is not absolutely prohibited. The statute does not say what is to happen if late in the pregnancy a fetal abnormality is indeed detected. This is why the writ jurisdiction of the court is invoked. Given the present situation, she submits the court must intervene. Her point, however, is fundamental. This case, she says, speaks directly to what has been described as the reproductive anatomy of the woman, specifically the expectant mother. It is important to see this in context. We have not understood Miss Saxena to suggest, as an advocate at our bar and as an officer of our court, we expect nothing less that a late termination of pregnancy is to be rubber stamped simply because the petitioner wants it. The law will not pander to whimsy or caprice. तो फिर इसमें आगे भी इसमें काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें हुई है। और फिर जो फीटस के ऊपर जो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की है वो इस तरह से है, द petitioner's fetus is detected with both microcephaly and lissencephaly, and this is what the future portends. This much Miss Saxena says is therefore certain. There is no prospect at all of the baby being born in a normal condition or having a normal, healthy, balanced life. The medical board has totally overlooked this.
मेडिकल बोर्ड के बारे में जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट ने की है उनकी रिकमेंडेशन के बारे में पैरा 26 एंड पैरा 27 में, accepting the medical board's view is therefore not just to condemn the fetus to a substandard life, but is to force on the petitioner and her husband an unhappy and traumatic parenthood. The effect on them and their family cannot even be imagined. Ms. Saxena is appropriately restrained in what she says, but there is no mistaking her true message. Hers is an appeal not only to the judicial mind, but to the moral conscience that must accompany it. फिर जो ऑनरेबल कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है ये पैरा 30 ऑनवर्ड है, ये वो है, व्हेन इट इज पुट टू अस लाइक दिस, whether from habit or training or received from or received wisdom, we turn to the act for answer. You will find none there. Ms. Saxena tells us that we do believe she is correct. The act is of 1971. It was ahead of its time, but in the cold sterility of a legislation, we must discern where justice lies when it is to be applied to human conditions. This is not a case where a blanket invocation of this or what provisions will provide an answer. We must ensure above all that the rights of the petitioner, including those enunciated by the Supreme Court, are never compromised in the sometimes blind application of a future. Justice may have to be blindfolded. It can never be allowed to be blindsided. We are agnostic about the relative positions of the parties. We can never be agnostic about where justice needs to be delivered. Another question has greatly troubled us. What if the carrying this fetus to them, the petitioner finds she cannot tend to it? Is she then to be forced to make the next decision to give up a child in adoption? How is that to be done? More importantly, why should that have to be done? The option of the medical board is oddly silent on this. It only addresses itself to medical interventions, the availability of assistance, and ongoing treatments, and nothing more. It does not take into account the social and economic position of the petitioner and her husband. It ignores their milieu entirely. It does not even attempt to envision the kind of life, one with no quality at all to speak of, that the petitioner must endure for an indefinite future if the board's recommendation is to be followed. The board really does only one thing: because late, therefore no. And that is plainly wrong, as we have seen. Given a severe fetal abnormality, the length of pregnancy does not matter. In cases such as these, we believe courts must calibrate themselves to not only the facts as they stand, but must also consider that what these cases present are, above all, profound questions of identity, agency, self-determination, and the right to make an informed choice. We will not ignore the petitioner's social and economic conditions. We believe Ms. Saxena is correct in her submissions. The petitioner takes an informed decision. It is not an easy one, but the decision in hers and hers alone to make. Once the condition in the statutes are met, the right to choose is the petitioner's. It is not a right of the medical board, and it is also not a right of the court to abrogate the petitioner's rights once they are found to fall within the contemplation of the law. पैरा 30 में जो है, द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड डज नॉट अपीयर टू अस एट ऑल. फिर जो अल्टीमेटली डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है, इन दीज सर्कमस्टांसेस वी अलाउ द petition and permit the medical termination of the petitioner's pregnancy. और पैरा 35 में, to protect the petitioner's privacy, we are making a separate operative order. The operative order is not to be uploaded. और इसमें काफ़ी जो है एप्रिशिएशन मिली है उन काउंसिल को जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया, बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया है. और ये जजमेंट जो है, मैं वंस अगेन आई विल बी रिकमेंडिंग कि आप इसकी जरूर पढ़ें, इसको पूरा पढ़ें और बहुत डिटेल में पढ़ें. इसमें बहुत अच्छे ढंग से जो इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और जो मेडिकल जो एस्पेक्ट्स है उनको डील किया गया है. कौन सी है ये जजमेंट? तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ उसकी तरफ. ये जो जजमेंट है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे, रिट पटिशन ST नंबर 1357 ऑफ 2023 इसी साल की है. ABC वो जो नेम जो इसमें कंसील किया गया है प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है. और
जो है ये ऑनरेबल डिवीजन बेंच का है, 20 जनवरी 2023 का है। ऑनरेबल जस्टिस GS पटेल एंड ऑनरेबल जस्टिस SG टिगे की डिवीजन बेंच का है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे पढ़ें और इसे अच्छी तरह से देखें। जजमेंट को बहुत ही शानदार तरीके से जजमेंट आई है, इसमें काफ़ी डिटेल में और बहुत ही अच्छे ढंग से वेल रिटन जजमेंट है। मुझे बहुत मजा आया इसको पूरा पढ़ने से, तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। सो बिफोर आई पार्ट माई वेज, वंस अगेन आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू to kindly subscribe it more and more, and also encourage other lawyers to subscribe to this channel so that in future I can make the better videos on the judgments and the law. And kindly also give your feedback constantly, which I always wait for. And thank you very much, and God bless you all.